So, guys, my name is Umesh Rathod, the founder of US Accounting Coach, and this is webinar for all those candidates who have doubts about the outsourcing industry, whether they have to enter into that or not, and what are the skills and what the qualification it is required. So, the date is 16th of May 2026. So the main thing is, in order to enter into the outsourcing industry, you must have at least graduation because companies are not hiring below the graduation. If you have, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, so outsourcing industries are not ready to hire. So you have to, you must have that knowledge, okay? And apart from that, knowledge of computer also. कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको अच्छा खासा आना चाहिए लाइक द बेसिक थिंग्स एक्सेल अगर एडवांस एक्सेल आता है सो दैट्स अ गुड वन और वर्ड देन कम्युनिकेशन दैट इज द मेन थिंग इफ यू डोंट नो द कम्युनिकेशन so they are not going to hire you because communication is the main thing and the English language that's on top. अगर आप if you would prefer to have Hindi communication so no is prefer to have it क्योंकि आप जब इंटरव्यू में भी जाते हो so they are asking for the English language only. Okay, so rather than today we are going to here learn something कि हम कौन सी चीजें here हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज के लिए either you would like to do a job or you would like to do a freelancing or if you would like to do set up your own outsourcing firm. तो ये तीनों चीजें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करेंगे एंड Hello, sir. One question. या यस प्लीज यस प्लीज टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन you are not audible. Hello. Yeah, am I Yes, audible yes, to you? please. Yeah, audible. Please Sir, tell me, if Aditya. yeah, yeah. Sir, if I have completed my graduation through like USOL, then there is any problem? When you have completed that, DUSOL, Delhi University Open School of Learning. okay. Yeah, that's not a problem. You know how to prepare the financials, like the balance sheet and journal Yeah, entries. yeah, 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 yeah. so that's not a so that should not be any problem. It's all about the degree. And see, if I if I say graduation, that doesn't mean BA, okay, Mm. or BSc. I'm prefer to have. I'm saying BCom only, okay, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम Yeah, से yeah. अगर आप लोगे तो ही कंपनी जो है वो आपको हायर करते हैं और Okay, sir. सो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों के माइंड में भी होगा कि लाइक हु एम आई और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ एंड सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस मैंने बहुत बारी लिंक्डइन पे यूएस अकाउंटिंग की जॉब पोस्ट देखी हैं। उसमें करेक्ट समटाइम्स उन्होंने यूएस सीएमए और यूएस सीपीए मेंशन किया होता है। तो उस टाइम पे लाइक हाउ विल क्या हम एलिजिबल होंगे उस जॉब के लिए अगर हमारे पास सीएमए या सीपीए नहीं है? नो देखिए सीपीए लाइक हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं दे कॉल्ड हाँ सीए हाँ, राइट ओके। सो द सेम वे इन यूएस दे आर सीपीए तो अगर ओके आप ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी होते हैं एनरोल्ड एजेंट हु आर वर्किंग डेडिकेटेडली फॉर द टैक्सेशन पार्ट ओके ओके सो ये सिनेरियो रहेगा आपका कि अगर सीपीए है या ईए की रिक्वायरमेंट है या सीएमए की रिक्वायरमेंट है एंड इफ यू आर ओनली ग्रेजुएट सो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई ओवर देयर ओके। मिस्टर जिष्णु व्हाट्स योर क्वेरी प्लीज गो अहेड I sir, myself, no.
I'm currently doing enrollment. I need practical knowledge regarding US taxes, and it will be useful for me this course. Okay, so you have completed your EA. No, I am enrolled Your voice is not coming, Mr. Jishu. hello, can you hear me? Oh yeah, little bit. Tell me. I'm passing. Something is wrong with your mic. Hello. Yeah. I'm passing. I'm passing. Mm-hmm. Okay, you are pursuing. Okay, okay, got it, got it. Okay, so if you are pursuing, then actually we are providing. Uh, everyone, please raise your hand one by one. I'm here to give you the answer. So for the EA course, we are also providing practical training for the US taxation. We do have so many candidates who are doing EA, and there they can complete they pass their first paper, but for second and third they require guidance or proper practical guidance, and that we are providing from here. Okay. Okay. Okay, so after the session you can connect with us and we will go with that, and whatever your query or for the actually we in our taxation training we cover 1040, 1065, 1120C and 1120S. Okay. Okay, everything we covered. Yeah. Okay, next, Mr. Pankaj. Hello. I have another question. Mr. Jishu, I think you need to fix your mic. Hello. Can you hear me? Yes, now. I have some queries. Okay. And firstly, if I'm also I also some knowledge regarding QuickBooks and payroll, etc. Mm-hmm. So can I get both practical knowledge of cards and payroll? Payroll is a part of accounting, as you know. Okay, and it's a Okay. QuickBooks. So that's really great if you go with the accounts and taxation both together. Okay. What will happen in the future? You will get dual opportunities Okay. for the taxation part also and for the accounting also. And once you learn payroll in depth in accounting part, so what will happen? You will understand Social Security, Medicare, Puta Suta, then 1099, everything in depth. So when you Okay. prepare 1040, so that's gonna be helpful for you. Okay. Okay? If I completing along with the enroll agent, it will be good score. Yeah. Yeah, definitely. It's a good scope. And now I think for the EA, you can give the exam from your home also. Earlier Yeah. it was only centers, but now you can give those exams from your home also, right? Yeah. From September. Yes, sure thing. So you can do it, and that's a really good one. Uh, yeah, Mr. Pankaj, I can see you are since a long time. How are you? Yeah, good evening, Mr. Umesh. Yeah, good evening, sir. So I've already enrolled in your combo course, Accounting and Taxation. Mm-hmm. Just to give you a background, I'm having some 20 years experience in BFSI. I was Mm-hmm. working with ICCI, and recently I've shifted to this US accounting and taxation Mm-hmm. area. Means I've taken a transition. I've recently passed my EA exams also, all three That's parts. great. Okay. And I just wanted to know from where I can begin because what I'm finding that most of the jobs are for those who are some having some experience like 2 years experience or 1 year experience, and I believe that most of the companies prefer hiring young people, means who are Mm-hmm. in 25 or 20. And those who have just completed the graduation and who have just recently passed their Mm-hmm. re-examination. So how would I fit in that role? Because totally open and ready to start as a fresh candidate. I'm not expecting to get what I was getting in my earlier role because I was working as a mid management as an EVP in ICCI. So of Mm-hmm. course I can't expect that thing to come to me at this moment. But I really want to get some hand holding or guidance how to begin at this point of time. Uh, for this, LinkedIn, it is the best platform Mhm. from where you can get directly work opportunity with the CPA, US CPA. Okay. One of my, I can't say a student, but one of the candidates, and she was qualified CA. She tried with one of the CPA firm at Canada and then USA.
So as of now, she is working as a tax analyst with US CPA, and she is earning a good amount, like we can say a tremendous amount. Mhm. So LinkedIn, into the LinkedIn, the job options. From the job Okay. options, you can connect with directly US CPA, and from there you can easily get the work also, because already having experience and already holding the degree also now. And Because the age criteria, it is only for the India, so don't worry. Golden Jubilee start after 40 only. I know that. that I know. So I'm just trying to complete. I'm just willing to complete your the 3 months training so that I can have an experience on QuickBooks and Mhm. Pro Connect everything. And Right. after that, I'm willing to take some type of opportunity. Means whether Mhm. it's hybrid or freelancing or whatever it is. So Yes. I'll be, of course, needing your guidance, me how to approach the qualified people so that I can get some type of opportunity. I'm based in Navi Mumbai actually. Definitely, definitely. Once you complete your training with the QuickBooks and Pro Connect with and all those 650 transactions, including payroll and 1099, you can connect with my admin team, and then you can schedule a meeting with me, and then we will go with one-on-one for a couple of hours, and I'll guide you. And Okay. I'll also guide you about the entire roadmap, like how you can approach them, what are the proposals should be, what should you need to give them rates, and what are the SOP and everything. Okay. Yeah. Okay, I'll be there for sure. So thank you, Mr. Smith. Thank you. Okay, yeah. Then Mr. Kamal, what's your query? 36-year-old, and I had done BCom, more than 10 years of experience in Indian accounting and taxation. So suggest me CPA EA is work for me. Yeah, definitely. Mr. Kamal, are you available there? Okay, yeah. So Mr. Kamal, if you are able to communicate, so that would be really good. Not for you only, but others also. Okay. No worries. So, yeah, so my 50 is it okay? See, Mr. Vijay, age has nothing to do with when you work with the US client. If you have enough skills and enough knowledge about the IT and their tools and about the softwares and everything, so you can easily approach to the US clients through LinkedIn job option, and from there they are ready to hire you. Let me share you guys the last job offer which I got from the Indian company, just on a base of my experience and skills. That was 34 LPA. And one of the company from USA, they offered me the basic salary of $62,000 per annum. So they are ready to hire. Okay, so don't worry. There is nothing to do with the job. I'm also 40 plus, but still I'm getting the offers. So don't worry. Yes, Mr. Vignesh, tell me. Hi, Yeah, hi. I have 8 years of experience in US taxation, and Okay. along with pursuing EA, Mm-hmm. I recently completed part two. Mm-hmm. I thinking to get to the US accounting skills and payroll preparation everything uh, Mm-hmm. to get the job placements in US uh, in India most of them are offshoring, no, offshoring Mm-hmm. job. Right. Like it is any placement service will be provided or No, no, we are providing training. What is our process? We provide training for 3 months. okay, And in that, we cover each and everything. If you go with the accounting part, so bookkeeping, accounting, review, finalization, payroll, sales tax, 1099, financial review, their schedules like deferred revenue, prepaid, accruals, accrued expense, accrued income. So we cover each and everything. And if you go with the taxation part, so we cover 1040, 65, 1120C and 1120S. And all these are live sessions. uh, Okay, so and on a base of that, we take exams, and into the exam we have to aggregate minimum 70% marks. And after that, Shupansha, we will go on that later on. As of now, we are discussing with other things. Okay, so and after the exam, we do have 70%. You have to get 70% marks minimum after that certificate. And after the certificate, we prepare your resume. And after your okay, resume, we take your interview also. sure, Exam is a total different thing, and interview is a total different thing. And once you pass through that interview, we share your resume with you also, the updated resume with you
plus the companies which are already tied with us, Okay. with them. And what is your location, by the way? I'm Tirupur, Tirupur. Tamil Nadu, Tamil Okay. Nadu. Actually, we do have franchise at Tiruvallur. Yeah, Tiruvallur. Yeah. Yeah, we do have franchise over there. हाय सर आई जस्ट Mhm. वांट टू नो कि आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा हमारे को आफ्टर सेशन Yeah, you will get it, Ridhima. Don't worry, you will get it. Okay. ओके Let's continue with other. Hello, Mr. Sadiq. Please tell me your Sir, queries. uh, sir, Yeah. this is not the question answer session, right? Yeah, but Because अभी तक तो session I start ही नहीं हुआ है, and we I are eagerly don't waiting worry, for the don't worry. session. Don't worry. I'm not going to end by 6:30. Okay, so don't worry. No, no, it's okay, it's okay. But just But telling you that the session is not yet started. We are questioning one by one. Then at the end, the time will go beyond that. no, That is the main problem. yeah, I Mr. hope you Sadiq. can understand my question. Yes, Mr. Sadiq. To be honest, I I'm here just because of the demands, because there are so many candidates. Yes. They are ready to learn this. They are ready to enroll, but they all want to talk with me and they have queries. Okay. And that is the reason I'm here, to be honest. And we have never done this kind of seminar. I think we have done before 6 months. Okay. Okay. Actually, this is the very first time I have joined, so Yeah. that is why I was not aware No, of this. actually, this is our first time with the official seminar. We can say that Okay. Okay, we have sir. never done this. Okay. Okay, sir. So definitely we're gonna start in 5 to 10 minutes, maximum 5 minutes. Okay. Mr. Sorry, Miss Jinal, what is your query? Jinal. Yes, sir. Yeah, Am I Miss audible? Jinal, please tell me what's your query. Actually, क्या हुआ है कि I have a 1 year experience in US accounting and taxation. Okay. Plus, I'm reading all the book of EA, but I can't do the exam. And now I got married in before 10 days, and now I'm finding a job in Surat. I applied everywhere, LinkedIn, Naukri.com, Indeed, but I So, can't get any type of response from any company, and I'm frustrated. So, Jinal, please guide me how can I get a job? Plus, I'm also confusing whether I'm applying for the course because I need to know US accounting and taxation course. But I'm confused whether I'm taking or not. okay, let me ask a couple of questions to you. You have experience of 1 year, accounts Yeah, and taxation both, right? yeah. Okay, please, I'm really sorry, but the 1 year experience in accounts and in taxation, it is not that much enough. Because either a person can do only data entry into the taxation in 1 year, or they can learn up to the finalization. Because to learn the finalization, it takes also 2 to 3 years to go beyond the data entry. Because in 1 year, anyone can learn bookkeeping or accounting or review or finalization. Right? So that's a bit tough. And what's your qualification? I'm a chartered accountant. You are qualified, still you have a problem. Yeah, because my particular criteria is I go to job in Surat only. I am from Surat. And you are looking for the work from home or No, no, work from office, but in Surat. yeah, so there's so many companies over there also. Yes, but I can't. मतलब मैंने बहुत सारा अप्लाई किया है बट कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है Okay, और okay. Chinal, so is it we can say do you know how to finalize the books in Indian manners? That is fine, but do you know in US also? no, no, Yeah, because their schedule. Yeah, their schedules and everything. And guys, I think we need to keep the queries doubt solving session after 30 minutes, yeah, because there are so many candidates are waiting for that. And Jinal, at the end, you will see our contact numbers. You can call me directly. Okay, we'll discuss on that and we'll figure it out. For the qualified CA, we do already have openings. Okay, thank we you so just much. take your exams and we will evaluate you. And if it is possible, then we definitely go with the placement support to you without enrollment, if it is possible. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Honey and one more, Ayushi Jain. Guys, can we schedule this question answer session after 30 minutes? Because there are so many candidates are waiting. Svetul also.
Yes, sure, sir. Okay, yeah. So guys, uh, I hope you all are doing great. And first of all, you are talking with me, and that's a really pleasure for me. So you all are able to see my screen. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, so guys, that's me. What I have done, what are my experience, and who are my mentors. So I have spent 7 years. I'm actually ex-employee of Analytics Business Solution, one of the leading company in Ahmedabad. They have nearby 1,400 staff. When it was started in the 2007, and only 6 accountants were there, so I was one of them. Then I have spent 4 years in Indian accounting in manufacturing units. Then I have also knowledge about IT, information technology. Like I'm too good in website development and data management. And since last couple of years, I'm providing training. And in my training, I'm not covering only accounts. I cover IT also. Because when you go with the outsourcing industry, so they require IT too. The knowledge of various things. So that is a thing. So let's go with the first page. When you Fine. go with the outsourcing industries, so what they are looking for, you should have all this knowledge and they are ready to hire, ready to get hired. You should have communication skills and you can focus on your customer, like a strong ability to understand and meet customers' expectation. That is the main thing. And it is applicable not in Mr. Aditya. She hasn't joined here. She's discussing. Uh, so customer focus. You have to focus on your customers and what their demands. Technical proficiency. Proficiency learned to software and technology specific. That is the main reason I'm in the outsourcing industry and I'm doing really good one. Just because of the knowledge of IT. So it is not like just you take knowledge of accounts and go ahead. And that is the reason in ICI you can see the AI also course over there and IT also. That is the main reason. Attention to detail. Whatever details you are getting from the client, there should be in a high accuracy in data handling. I'm gonna share few of the I'm not going to use the word like I'm going to share as per the US, like I have proficiency with that language. I'm gonna share few of my experience with the US clients also, so that will be helpful for you. Recently, I got one of the tasks from a Kuwait company, and they have given work to us. They are nearby 3,000 transactions and project accounting they were doing, but they were unable to. They were managing all the things in their local Excel and other software, but they were not able to do in QuickBooks. So what we have done, we have imported all those data into QuickBooks. So you should have data handling skills also when you work with the US clients. Whenever you get any clients, what they are going to do, they just give you the data. They dump the data and you have to organize them and you have to make proper balance sheet, P&L and financial reports. I mean cash flow. Then your English language should be you should be proficient in English communication. Then analytical thinking, ability to analyze information, identity issue, and provide efficiency, adaptability and flexibility. Whenever you get any new technology, you have to adopt it. Like the AI, you can't work without the AI as of now. In fact, today, if I say I have prepared all this presentation and everything using AI only. Yeah, Shubhansha, that is possible through QBT to QBO. Uh, that the option is already available in QBO. You can dump data from QBT to QBO. QBT that means QuickBooks Desktop, guys, and QBO that means QuickBooks Online.
Adaptability and flexibility. Then time management, ability to meet deadlines, manage priorities, and handle multiple tasks. Because when you work for the US client, you are not going to work only for one client. There are multiple clients. In India, what's happening? हम काम करते हैं कोई भी एक कंपनी के लिए और वहां पर जाकर, जबकि यूएस में क्या होता है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, सो यू हैव टू वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम. ओके, सो एक वो चीज रहेगी. देन what are the softwares or skills you do required. देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ऑन अ बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू गाइस कैन इवेल्युएट योरसेल्फ कि इसमें से आपको कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं. इसमें से अगर आपको मोर देन 80% चीजें आती है, सो यू आर गुड टू गो विद द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज. एंड इफ यू डू नॉट हैव knowledge about those, then you have to learn. And we are providing 100% of all this to you, like QuickBooks software, basic software skills required in US outsourcing industry. Accounting and bookkeeping roles heavily rely on cloud accounting. Software like QuickBooks and Xero are the most in demand. More than 70% clients in US, they are using QuickBooks. Okay, so you must have to learn. Just like in India, there are so many companies are using Tally and Zoho now. So the same way, QuickBooks also required. QuickBooks key skills in QuickBooks. So what are the things you guys need to know and you have to learn? Company setup, chart of accounts, recording transaction like sales, expense, bank, JV with journal entries, accounts payable and accounts receivable, and then scrutiny, bank reco, credit card reco, invoice billing, everything covered into QuickBooks software. And we teach this each and everything. And once you learn QuickBooks, you can learn Xero automatically. Both are almost all similar and functionality is similar. But yes, QuickBooks has more functionalities. And not only knowledge of accounting software, you must have knowledge about Excel. You should have knowledge about Word. You should have knowledge about Outlook. Here, like a Gmail, we are using for the email, as they are using Outlook. And cloud storage, like a Google Drive, Dropbox, OneDrive, how it works, how to share the files, everything you should know. Then data security, understanding of data privacy, security, best practice, and confidentiality. Whenever you work for any US client, so you should not share their data with anyone. Discussion, that is totally fine, but you cannot share their data with anyone. That is called data privacy and data security. So you should have these skills also. And after that, you can work. So guys, at the end of the session, please evaluate yourself, where you are and why you are not getting the jobs, or where is the lack of knowledge. Wherever you need our help to fill it up, we are ready for that. Okay. Then the next one, the waste and interesting thing for everyone. Salary. How much salary we are getting here, and how much salary employees in USA they are getting. In India, we get nearby 2 lakhs to 4 lakhs on a starting level as a fresher, and that's the approx number. And compared to that, in US, they are getting 41 to 54 LPA on a starting level. $48,000 per annum, that is their base salary package to their candidates. Okay. And as I told you, I got 62,000. So that was this part. I got directly offer from them. After 2 or 3 years in India, you could be at 5 or 8 LPA. And in US, they are paying 66 to 91 LPA. Not in India, they pay in USA. Now, salary comparison for the freshers. And in this session, guys, we are going to learn deferred revenue journal entries, prepaid journal entries, accruals, and how to
pass out all those transactions. We are going to learn that, and we are not going to charge anything for that. And that is just because you guys get an idea how we teach or how am I teach. Okay. So comparison: Indian accountant in India, Indian accounting versus accountant in US outsourcing industries. Work environment in India, in Indian company, you have to work on site and work with local clients and teams. And in the US, you can work as a remote, work from home, work with US clients and global teams. Work timing like 9 to 5 schedules, where in US, if you work with the outsourcing industry, so some of the companies are like offering 11 to 8:30, and some of the companies are offering evening shift or night shifts. So that depends upon your choice where you would like to go. Now, skills and tools. In India, generally Tally, Excel, okay, and GST, TDS, ROC, etc. You have to deal with them. But if you go with the US in outsourcing industry, so you have to deal with QuickBooks, Xero, NetSuite, SAP, or Bill.com. These are the software. I'm uh, sure like more than 90% of candidates are not aware about this. What are those? Okay, Sukansha, we will discuss after 30 minutes, as I told you. Okay, that's a distraction your message. Huh? So, advanced Excel, QuickBooks, Bill.com, Gusto, Dex, everything are there. You have to learn with that. And also US GAAP. Month end closing and process accuracy. Work type, statutory compliance or bookkeeping or tax filing finalization. Well, what there? Bookkeeping, ARP, reconciliation, then payroll, reporting, analysis, more process driven and analytics. They believe in reporting modules. Then salary potentials approx on a starting 0 to 5 years. How much salary our Indian accountants are getting? That is 2 to 6 lakhs till the 5 years. And what's happening in outsourcing industries? In 2 to 5 years, they start from 4 LPA and reach up to 14 LPA. That is the biggest difference. Okay, so here you can see the comparison between them. What is it? That is the main. And good salary income can make stable lifestyle also. Okay, so that's the thing. Career growth, slower growth, limited exposure to global processes, and here faster growth, exposure to international accounting and standards and tools. Learning exposure limited to local regulatories, where in US game, the best practice continuous learning and upskills. In US outsourcing industry, if you'd like to go, so guys, you have to make sure and you have to be ready to learn everything new things. Every day, new things you have to learn. It is not like that कि आपको Excel आ चुका है, आपको QuickBooks आता है, so that is fine. You are good and you have made your space. It is not like that. Every day you have to learn new things. और यहाँ पे बहुत बेसिक्स चीजें भी वर्कआउट होता है where you go in outsourcing industry, so every day you have to learn new things. You have to deal with merchant accounts. You have to deal with the third party or means or the sales tax department. तो टोटली यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ का जो अकाउंटिंग वर्क का स्टाइल है वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे है और उसी तरह से डील करना है. वहाँ पे लेस पेपर वर्क है, यहाँ पे लेस वी कैन से टेक्नोलॉजी वर्क, लेस टेक वर्क है. वहाँ पे लेस पेपर वर्क है, बहुत कम पेपर्स यूज होते हैं. पेपर्स वगैरह कब यूज होता है? जब मीटिंग्स वगैरह होती है तो नोट्स बनाने के लिए, दैट्स इट. और या तो फिर किसी ने टास्क दिया हुआ है तो रफ पेड में नोट करने के लिए, नथिंग एल्स, नो फाइलिंग्स एंड नथिंग. सॉफ्टवेयर के अंदर ही डॉक्यूमेंट अटैच करने के ऑप्शंस होते हैं, सो यू कैन अटैच द डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड यू कैन गेट इट. एंड व्हेनेवर यू डू गाइस any kind of entry, that is the rule, main rule in India also and for US also. Whenever you do any transaction or post any transaction into the software, just you have to keep in mind
कि अगर मुझे फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन का रिकंसिलेशन करना होगा, so am I able to do it? Whenever you post transactions into the QBO or any other software, just keep in mind कि फ्यूचर में आप जो भी ये अभी जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो, what is the effect of that and is it useful to reconcile in a future or not? So every time post transaction in that way only. जैसे कि बैंक में से एक ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट किया, ठीक है, जस्ट कि यू मेड पेमेंट ऑफ एक्स अमाउंट टू एक्स वेंडर, ओके, एक्स अमाउंट और एक्स एक्सपेंस है, बट इन अ फ्यूचर अगर कुछ हुआ कि आपको पता ही नहीं कि हाँ इसको रिकंसाइल करना है, लाइक एडवर्टाइजर मार्केटिंग का एक्सपेंस है, आपने पोस्ट कर दिया, बट यू हैवंट मेंशन द वेंडर नेम टू whom you have paid, you haven't mentioned the period for which period that event was there. सो इन फ्यूचर जब पास्ट में जाके हमें चेक करना होगा कि हमने इवेंट की थी, कहाँ पर की थी, उसका रिजल्ट क्या था, सो रिजल्ट ड्रिवन डेटा यू हैव टू रिकॉर्ड इन दैट वे ओनली। कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए, और फ्यूचर में जब भी उसकी जरूरत हो तो उसको प्रॉपरली उसी तरह से पोस्टिंग करना है। यू शुड नॉट पोस्ट लाइक दैट कि हाँ चलो एंट्री कर दिए। बुक कीपिंग इट्स जस्ट अ डेटा एंट्री, सो यू शुड नॉट बी अ बुक कीपर ओनली, you have to become either reviewer, okay, या तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर। योर गोल शुड बी लाइक दैट। एंड ये तो भी 2 या 5 साल का कंपैरिजन था। हियर आई एम गोना शो यू अप टू 10 years कंपैरिजन। I have seen so many candidates because during the day I'm talking with nearby at least 40 to 50 calls minimum. Some of them are saying कि उनकी सैलरी अभी 40,000 है after 8 years. So that's a real surprising thing. 40,000 after 8 years, and they want to change the job now. So कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ जिनकी सैलरी है after 12 years 70,000. So it's very less salary. After 12 years 70,000 कोई मतलब नहीं है. And if you go here in Indian accounting after 10 years, Indian accounting में 8 से 15 लाख का पैकेज होता है मैक्स टू मैक्स। अब यहाँ पे जो खत्म होता है 15 lakhs यहाँ स्टार्ट होता है। You can see that. And all these numbers are authenticate number, and I have taken all this data from ChatGPT itself. ओके, और ये जो भी चीज बनाई हुई है इसे बनाने में मुझे 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वी कवर इन अवर ट्रेनिंग कि अगर हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हैंडीकैप पर्सन नहीं बनाएंगे कि आपको हम जॉब ढूंढ के देंगे आप वहां पे जाके जॉब करो। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी आर गोइंग टू मेक यू सेल्फ इंडिपेंडेंट, थ्रू विच व्हाट विल हैपन, you can fight for yourself, you can get the job by yourself, you can get the right direction and you can get the job. So we are going to work in that only. Okay, so what you can get, typical role senior accountant or assistant manager or finance executive, and here either TL or accounting manager. Salary comparison 8 to 15 LPA in India after 10 years, and if you work for the outsourcing industry, that is 18 to 35 LPA. Moderate growth depend on company size and opportunity. That is true. Everyone is admit that. Your growth is totally depend upon the company. If the company is good, the owner is good, so you are getting good package. Okay, and here high growth potential because clear path to manager, finance manager, controller, and beyond. So this is the biggest, we can say, कह सकते हैं कि डाउनग्रेड जो चीज है दैट इज दैट मॉडरेट ग्रोथ है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। लिमिटेड टू लोकल मार्केट एंड इंडियन रेगुलेटरीज, where if you go with the global exposure, so you have to deal with the US clients, global tools, and international standards. Basic to intermediate accounting, tally, or same, and it will go with the skills expertise. You learn advanced US GAAP, cloud accounting, and automation, reporting, processing implement. There are so many other things also. General stable office hours.
and better pay with flexible or remote work. So in every way, you can see that is the better to go in outsourcing industry. The main thing is 18 to 35 LPA. Yeah, Mr. Sarosh, you will get it. Don't worry. I knew everyone gonna ask for this, and so that was already prepared in that way only. Now, अब यहाँ पे कुछ interesting. That was the general discussion till now. But now the thing which we are going to discuss, that is really a serious thing. अभी तक जो था वो हमारा नॉर्मल डिस्कशन था कि बेनिफिट्स क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, व्हाई यू हैव टू मूव फ्रॉम देयर एंड व्हाट एवर द डिस्कशन वी हैव डन. नाउ इन इंडिया वी हैव टू डू एंट्रीज और अकाउंट्स मैनेजर जो है Mr. Praveen Kashyap. I'm the CEO and founder of US Accounting Coach. I'm not an employee. Okay. So day-to-day activities and month-end closing. In India, we do only day-to-day activities, and we do not have over here the month-end closing. Or if it is so, जो MNC companies है वहीं पे होता है monthly closing वगैरह, right? So, Mr. Kevin, we will do discussion, the doubt solving session by 6:10. Till then, we have to focus over here. Okay, sorry for that. Day-to-day activities में recording transactions, invoice processing, bank reconciliation, managing accounts payable, receivable, expense, payroll, and general ledger entries. यही सारी चीजें होती है इंडिया में. But in what's happening when you have the to an Excel in accounting to know beyond the day-to-day activities. That is the main thing. You have to come out from your, or we can say the safe zone. You have to come out from your safe zone to learn outsourcing and their activities. Because in month-end activities, accurate closing, you should be able to do it. Timely reporting, you have to do to your clients. You cannot excuse with the time. My internet was not working, my laptop got stuck up, I had family issues, or I had function. You can't give the excuses. They are not there for the excuse. You have to be more and more accurate. And financial accuracy and business insights. Or you all, apart from the uh, regular financial report in Excel sheet, you have to prepare the analysis report also. And main thing, when you work for any US client, you have to think that that is your own business and you are doing accounting for your own business. If you do that, so debit and credit का जो भी problem है, you're gonna sort it out very easily. तभी आप समझ पाओगे कि डेबिट और क्रेडिट कौन सी एंट्री कब करनी है, कौन सी एंट्री कब नहीं करनी है. And let me give you guys simple 4 lines and you can do accounting easily. Whenever your expense and assets increase, debit them. Whenever your expense and assets increase, debit them. Whenever your income and liability increase, credit them. Income means sales. Whenever your sales and liability increase, credit them. Now you think कि ये जो 2 लाइन्स है इसके अंदर सारी चीज आ जाती है. If I give you one example, you have purchased inventory of $4,000 on credit. तो आपने इन्वेंट्री परचेस की है. इन्वेंट्री दैट इज योर करंट असेट्स, डेबिट इट. आपने क्रेडिट पे परचेस किया हुआ है, मतलब आपने वेंडर के पास से परचेस किया है, मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई. क्रेडिट इट. इन्वेंट्री डेबिट, ईपी क्रेडिट. एंड वी हैव आवर 12 लाइंस ट्यूटोरियल. बस वो 12 लाइंस कोई भी गो थ्रू कर लेता है एंड यू कैन डू अकाउंटिंग इजीली. सो अपार्ट फ्रॉम द those activities, these are the activities you have to do. डे टू डे एक्टिविटीज के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है कि जो सीखनी होती है. एंड ओनली ऑन बेस ऑफ दैट यू कैन डू प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर द क्लाइंट्स. एंड ऑल दिस is applicable for the freelancing work also. If you are doing freelancing work, so you have to do this also. Reconciliation of each and every line item of balance sheet.
अभी तक शायद पॉसिबल होगा, ये भी पता नहीं होगा कि बैलेंस शीट की हर एक लाइन आइटम रिकंसाइल होती है. हाउ टू डू दैट? आई विल शो यू इन क्विकबुक्स सॉफ्टवेयर. अभी तक सबको यही पता था कि बैंक एंड क्रेडिट का रिकंसिलेशन होता है, बट ईच एंड एवरी लाइन आइटम ऑफ क्विकबुक, लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट यू कैन रिकंसाइल. Then prepaid, review prepaid expenses and amortization schedule. Okay, उनका amortization कैसे होता है, उनकी एंट्री कैसे होती है, that we are going to learn in this session. Or maybe this session gonna beyond 6:30, so don't worry, I don't have a problem. Inventory valuation कैसे होती है, COGS कैसे count होता है, that you have to learn. Laser scrutiny, each and every line item for any AR or AP you have to check it, or all expenses you have to check it. Deferred revenue. Deferred revenue कैसा होता है, क्या है, what is that, why it is required, if you are doing accrual based accounting, so why it is required, so that is also the part of it you have to learn, and we process that transaction. So deferred revenue, accruals and prepaid, we are going to process that transaction just after 5 minutes. And accruals, deferred revenue मतलब advance payment from the customer which you have received for the services to be rendered in a future. जो फ्यूचर में आप सर्विस देने वाले हो उनका पेमेंट आपके पास एडवांस में पहले से आ चुका है. ओके, सो दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू. अक्रूअल्स, आपका एक्सपेंस हो चुका है बट आपने अभी पे नहीं किया हुआ. जस्ट लाइक एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड पेरोल पेबल, राइट. पेरोल मतलब सैलरीज एंड वेजेस की जो सपोज लेट्स से कि 430 अप्रैल मंथ का पे करना है, बट यू आर गोइंग टू पे बाय द 3rd of May. तो अप्रैल मंथ में उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, हाउ वी हैव टू रिवर्स इट आउट दैट एंट्रीज. सो एवरीथिंग कवर्ड इन आवर ट्रेनिंग. पेरोल जैसे इंडिया के अंदर होता है पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, देन एटीसी डिडक्शन, एटीजीओ, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. The same way in US also, but the percentage and cappings are different. Social Security, Medicare, UTA, SUTA, 401k, investment, then garnishment, everything is there. So how we have to do, how we have to create the liabilities, कैसे pay करना है, everything according to that. Profit and loss account review, that is the main thing. Consistency ratio you need to check into that. Then a relevant ratio you have to check. Materiality ratio you have to check. So how to check all this, we also teach in our training. Okay, so ये थी apart from the regular data entry, ये इतनी चीजें मंथ एंड क्लोजिंग के अंदर आपको आनी चाहिए. बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आई वांट टू बी अ फ्रीलांसर. यहाँ पे नियर बाय, आई वुड से नियर बाय 85, 87, 80, नियर बाय 90 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए. एवरीवन वुड लाइक टू डू द फ्रीलांसिंग वर्क, बट द थिंग इज, फ्रीलांसिंग करने के लिए एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए. I have already done freelancing work in IT, but I never tried for accounts because I was tired by doing accounting work for 14 years. Then I decided to give training. Just a minute, guys. So abilities required to start freelancing work. Skills. आपके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए. कौन सी स्किल्स? सॉफ्टवेयर की स्किल्स, अकाउंटिंग की स्किल्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन की स्किल्स, जो हमने फर्स्ट पेज पे देखी थी, वो सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए. Only after that you can do it. माइंडसेट, एक माइंडसेट होना चाहिए, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट. क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आप उस पर वर्कआउट करोगे तो ही होगा. इफ यू डू, आज आप सोचो मुझे फ्रीलांसिंग करना है, यू ट्राई टुडे एंड देन अपने 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, 4 दिन ट्राई किया, फिर वो नहीं हो रहा है, लेट इट गो, डोंट डू दैट. माइंडसेट एक रखना है आपको. टूल्स का नॉलेज मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह जो है उनका, अलग अलग सॉफ्टवेयर, उनके यूजेस कैसे होते हैं. एंड डिसिप्लिन एज आई टोल्ड यू, एक टाइमिंग फिक्स करना होता है कि ये टाइमिंग आपको काम करना है. सो दीज आर दी स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम फ्रीलांसर.
अब आप लोग खुद इवेल्युएट कर लो वेयर यू आर। ओके, अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो वी आर एबल टू गिव यू ऑल दिस टेक्निकल एक्सपर्टाइज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन डोमेन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्स, पेरोल, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सब के अंदर होना चाहिए और इनमें सब में आपको अपडेटेड भी रहना है, तो ये फ्रीलांसिंग कर पाओगे। क्योंकि क्लाइंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड एट दैट टाइम यू शुड बी आंसरेबल। एंड द अदर थिंग कि along with accounting you should be aware about taxation also। अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो इजी रहेगा समझने में और क्लाइंट को समझाने में। एंड टूल्स, सॉफ्टवेयर प्रेफरेंस, एज आई टोल्ड यू, एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल, एक्यूरेसी, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एंड मार्केट सेल्फ प्रमोशन, खुद का प्रमोशन कैसे करना है, मार्केट के सिनेरियो क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ कैसे नेगोशिएशन करना है वो भी होना चाहिए, और एडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। एज आई टोल्ड यू, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में अगर आना है तो एवरी डे यू हैव टू बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड देन बिजनेस मैनेजमेंट। तो अभी के लिए हम ये करते हैं, एंड नाउ आई एम गोना टीच यू अदर थिंग्स, द लाइव ट्रेनिंग ऑफ few things। जस्ट अ मिनट। सो आप लोगों को ओके, कुछ लोगों को क्वेरी थी, सो दे कैन आस्क क्वेश्चन नाउ, टिल देन आई एम गोना रेडी द एक्सेल शीट। हनी, व्हाट्स योर क्वेरी? सर मैंने सुना है कि फ्रीलांसिंग में ना इतना जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो इज इट ट्रू कि नहीं मिलता है? मतलब क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, और वो जो No फिक्स worries. What is your qualification बीकॉम। and other expertise? सर मैं मेरा ना 12 इयर्स का गैप है। अभी जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर की थी, राइट, जो हाँ 10 पॉइंट थे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, यू नो हाँ। अबाउट अकाउंटिंग टूल्स एंड एच एंड एवरीथिंग। नो सर, मेरा ना वो गैप हो गया है, सो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता है, और पहले भी था तो मेरा लाइक 1 ईयर जितना ही एक्सपीरियंस था। तो फिर टफ होगा ना, तो उसका आपको सीखना ही होगा, सीखोगे तभी आप कर पाओगे ना। हाँ मतलब मैं इसमें एनरोल कर लिया है मैंने, तो हम्म। मैं यही पूछ रही थी कि मतलब आगे चल के मुझे इसमें फ्रीलांसिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है? यस डेफिनेटली, आपके पास सारी स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, सो यू कैन इजीली गेट द अपॉर्चुनिटीज। ओके, और वर्क फ्रॉम होम का अगर मुझे ऑप्शंस चाहिए तो उसका भी? फ्रीलांसिंग अगर आप काम करोगे, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग मतलब वर्क फ्रॉम होम ही हुआ ना, इट्स अ काइंड ऑफ रिमोट जॉब। नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूंगी, उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए मैं सोच रही हूँ। whenever you start your freelancing work, और जब भी आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन अप्रोच टू मी, एंड इवन क्लाइंट सेटअप के अंदर भी आपको हेल्प चाहिए तो भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एंट्रीज का ऑटोमेशन अगर आपको सेट करना है, आपको अगर मर्चेंट अकाउंट क्विकबुक्स के साथ इंटीग्रेट करना है टू रिड्यूस योर वर्किंग आवर्स, सो आई डू दैट। बैंक अगर इंटीग्रेट करनी है क्विकबुक्स के साथ, सो आई डू इट। पेरोल अगर इंटीग्रेट करना है, सो आई डू दैट ऑल्सो। ओके, और सर उसमें ना मुझे एक्सेल वगैरह का भी मतलब पहले करती थी, लेकिन अभी वो पूरा वॉश आउट हो गया है कि एक्सेल का भी कोई बेसिक बात नहीं, नॉलेज है। तो आपकी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, यू कैन कनेक्ट विद अस एंड टू द एडमिन डिपार्टमेंट। और एक्सेल के लिए जो बेसिक चीज होती है, 10 या 15 टूल होते हैं, वो आने चाहिए, दैट्स इट। तो हम सिखा देंगे आपको, नो वरीज। ओके, और इसमें क्विकबुक के साथ जेरो भी सिखा लोगे ना? क्विकबुक्स आपको आ जाएगा, उसके बाद जेरो का हम सेशन रखेंगे एक, और जेरो क्विकबुक्स आ जाएगा तो जेरो अपने आप आपको आ जाएगा। सो डोंट वरी, उसके प्रेशर में बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसका। ओके 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 सर, थैंक यू। या आयुषी, व्हाट्स योर क्वेरी? Ayushi, are you there? I think Ayushi is. Ayushi, you are on mute mode. Okay. Okay. Mr. Ashwin. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Please tell me. Yes, sir. I have 12 years of work experience. I just switched 6 months back into finance. My original background was in finance. I am a CA intermediate student when I was in college. Okay. But last 12 years, I was working in a completely different field.
I have career switches in between. So I switched again into finance 6 months back. Right now, I'm working as a financial planning and analysis officer in a accounting firm only, but that works for the Indian client only. Got it. They are a virtual CFO, so I work as a FP&A. Okay. So I also have same. I also have a same query, or I also have a same goal that I want to set up my own freelancing business related into same. But I have heard the same thing that there are many hurdles getting freelancing clients. I am theoretically very strong in the accounting, but I have zero familiarity with the softwares. Like Excel also I have learned 6, 7 months back, and that is also on job training I have done. So Excel is also you can say intermediate level. I can work on the Excel. See, So Mr. Ashwin, as of now, you are already working in CFO, virtual as a virtual CFO, right? no, I'm not working as a virtual CFO. I handle two things: client communications and financial planning and analysis, the Got budgeting it. part Got it. only. Got it. Got it. Got it. See, the person who is preparing budgets and forecasting, so he must have knowledge about the company's background or the accounting numbers. So Oh he yes. also, yeah, he or she already playing with those numbers, and it's a huge scope for your profile in outsourcing industries. Okay. And you're not gonna be hired by the small companies. You're gonna be Okay. hired by the mid-sized company or the uh, big companies only. Okay. Okay, so you already Sir, have that but skills. I don't have any confidence to work independently on that area. Because Okay, so right now what I do is I handle the client communication. I get the reports, I interpret them because I have that knowledge of yeah, interpretation. got it. See, the main problem is जहाँ पे हम नहीं है, so we are afraid कि what will happen अगर ये हुआ तो. But if you get that knowledge, so you can easily do it. So just gain your Okay. confidence. The first thing is you have to gain your confidence. Okay. I can understand that during the last 12 years you have spent somewhere else in other Mm. industries or in other segments. So that's the reason. That could be the main reason for the Yes. confidence. So don't worry. See, whatever you're doing, whenever you're doing and whatever you're doing, just do with your 100% confidence and give your 100%. You can definitely get the answer. Okay. Thank you, sir. But are there opportunities? Because I Yeah, meet many definitely. fellow candidates who are trying to get the opportunity since months, but they are not getting the opportunities It in the is not freelance that. market. In the freelance market, I'm saying See, Upwork, fewer like platforms. as of now, you are working on site, right? No, I'm working remotely. Yeah, I Remote. have to go Yeah. on site, but that is once or twice weekly. Okay, okay. But see, if you go with the on-site, so rather than work from home, if you go with the Mm. on-site, so you're gonna learn more thing also. As you told me, like a few things you Mm. already forget, right? Yes, So if you are on-site, so you can get more and more knowledge. You can gain knowledge from everywhere, yes, right? I hope you remember that word, Three Idiots movie. Knowledge हर जगह है, just get it. So you can do that. क्योंकि yes, एक जगह अगर रहेंगे तो वी कैन से इन संस्कृत लैंग्वेज आई थिंक दैट वर्ड कुक मंडूक दैट मीन्स yes. राइट कुएं का Kuweka मंडूक Mendip. राइट सो Yes, रादर दैन yes. वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न अ लॉट थिंग्स Okay. okay and if But you would there like are opportunities, right? yeah definitely if you go Okay. with the LinkedIn profile I mean Uh, into the LinkedIn the job option mm. from there. Sir, but I'm not asking about the job. I'm asking about the freelance opportunities. Yeah, I want to I'm switch talking it about to freelance. I'm talking about freelancing and remote work. You can directly work with Okay. the US clients from here. So it's a kind of freelancing, na? Okay. 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 Okay, so that Yes. is available. Yeah. So that's available over there. And if your luck is really good, so you're gonna work with a direct US CPA firm. Okay. Great. But before that, please gain the knowledge of all the softwares and then Okay. go with them because they're gonna ask each and everything if you're gonna work on as a virtual CFO. Okay. Yes. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very Yeah, much. thank you. Ayushi, please tell me what was your query? हाय सर, मेरी क्वेरी ये है कि मुझे है ना
15 years का एक्सपीरियंस है फ्रॉम डाटा एंट्री ऑपरेटर टू द अकाउंट सीनियर अकाउंटेंट, बट अब मैं ऑन साइट से रिमोट स्विच करना चाहती हूँ और मैं यूएस अकाउंटिंग में जाना चाहती हूँ. सिंस लास्ट मंथ आई एम ट्राइंग टू गेट द जॉब एंड लिंक्डइन भी यूज किया, सब कुछ यूज किया, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. व्हाट विल बी द रीजन? Okay, so you are from Indian accounting, right? यस. Okay. See, जब आप रिमोट वर्क के लिए जाते हो तो एज आई शो यू द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच दे आर लुकिंग फॉर. आपको एक तो क्विक बुक्स आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. आपको वहाँ के सेल्स टैक्स, पेरोल, इनकम टैक्स एंड अदर कंप्लायंसेस आपको पता होने चाहिए. इफ यू I am अगर learning that from YouTube and other sources, but रिज्यूम में वैसा मेंशन नहीं कर सकते हैं. आता है बट उसको कैसे no, that मेंशन? see, if you are learning from somewhere, so that is totally fine, but you should have that confidence to mention in your resume. ओके. हमारे यहाँ से जितने भी कैंडिडेट्स हम देते हैं, हम हर एक के कैंडिडेट, हर कैंडिडेट का रिज्यूम हम खुद बनाते हैं एंड वी प्राउडली मेंशन दैट कि हम ये किया हुआ. कैंडिडेट्स जाते हैं, उनको जॉब मिलती है. ओके. और थोड़ा अगर कम्युनिकेशन स्किल्स का सर हो तो वो आपके यहाँ से ठीक करवा पाएंगे क्या? मतलब मेनली कम्युनिकेशन का ही गैप है. Communication with that, you want to say the communication in English? हाँ, इन इंग्लिश. You have, I sure you have 15 years of experience. So एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एक लेवल पे होना चाहिए. और आपके कम्युनिकेशन में वही नहीं मिल रहा है. No, I am good in written communication, but in verbal, That you have already with enrolled with us, right? no, not yet. ओके, नो वरीज. देखिए, कम्युनिकेशन में ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आते हैं ना, जी. हम क्या करते हैं कि भले ही उनको इंग्लिश नहीं आती, बट वी ट्राई टू कवर द एंटायर ट्रेनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. रीजन, उसका रिजल्ट क्या होता है? आफ्टर 2 months दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके. क्योंकि 2 month तक उन्होंने सिर्फ इंग्लिश ही सुना हुआ है एवरी डे 1.5 to 2 hours. जी जी. एक जो डर होता है वो भी निकलते जाता है और धीमे धीमे वो सीखते भी जाते हैं. ओके. हमारे यहाँ पे ये लैंग्वेज चीज को लेके बहुत हमारे वहाँ पे डिस्कशन होता है, बहुत सी चीजें होती है, बट वी सॉर्ट इट आउट. उनको बेनिफिट बाद में 2 month के बाद उनको खुद को पता चल जाता है कि हाँ राइट, ये जो था भले ही हमने इंग्लिश में पढ़ा है बट अब हमको इंग्लिश आने लगी है. सर, और अपॉर्चुनिटीज के लिए कहाँ मतलब ट्राई कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज के लिए लिंक्डइन का जॉब ऑप्शंस है, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है और वहीं से बहुत से कैंडिडेट हायर भी होते हैं. और 15 years मतलब कोई भी कंपनी हायर करने के लिए रेडी हो जाएगी. वन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम नासिक एंड द गर्ल इज पूजा आहेर. शी हैड 5 years of gap after 4 years of experience. Okay. Just because of marriage and kids. Yes. She got to work from home opportunities. From Indian accounting to US? Yeah, उनको इंडियन अकाउंटिंग आता ही नहीं था. I gave them 3 months training and as of now she is working from home. Okay. उनको तो 4 साल का एक्सपीरियंस था, आपको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है. जी जी. ठीक है. सर, तो मैं आपके यहाँ कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, मतलब अगर मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहूँ तो? After the call, we can connect over the call or maybe on a WhatsApp. Okay. I'm going to share my numbers and everything. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you. Mr. Rupesh. Sorry guys, I know कि देखिए सबको questions है, so I'm here to answer them. I'm ready to spend extra hours. That's totally fine. And you all are requested to complete your question at the earliest. Yeah, Hello, Mr. sir. Yeah, Mr. Please. सर एक्चुअली मैं ना अभी सीए फाइनल में हूँ. Okay. और ऐसे फ्रीलांसिंग भी वर्क करता हूँ एज इंडियन में ही. Okay. मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एज यूएस में अकाउंटिंग टैक्सेशन के लिए. मैं सीए फाइनल भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ. मैं ये भी प्लानिंग कर रहा हूँ साथ साथ मैं एनरोल एजेंट का भी कोर्स में कर लूँगा.
ओके इससे क्या मेरी टैक्सेशन यूएस टैक्सेशन में ब्रीफ आ जाएगी, तो मैं सही डायरेक्शन में हूँ या कुछ और कोई एडिशनल? सीए फाइनल में आपने कौन सा दोनों ग्रुप कौन सा ग्रुप क्लियर किया हुआ, फर्स्ट या सेकंड? मेरा अभी सेकंड हो चुका है। सेकंड हो चुका, ग्रेट, ओके, तो फर्स्ट बाकी है ना। सो along with that you फर्स्ट। can go with, along with that you can go with the EE. ओके। ओके, एनरोल्ड एजेंट आप कर लेते हो तो उससे क्या होगा, 3 पेपर्स रहते हैं उनके, नियर बाय 9 to 12 मंथ का उनका ड्यूरेशन रहता है, एंड नाउ यू कैन गिव दोस एग्जाम फ्रॉम योर होम आल्सो, नो नीड यस टू गो सर। विद सेंटर्स, राइट। एंड उससे राइट। होगा क्या कि अकाउंटिंग क्रेडिट डेबिट तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो अभी, ये कर लोगे तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी आ जाएगी फॉर दी यस सर। along with the PTI नंबर, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप टैक्स रिटर्न वगैरह पे भी काम कर पाओगे, एंड the remuneration for each and every tax return is a really good one, starting from $150 to $500 per return, कि जो आप इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। या सर एक्चुअल में क्या ना, मैं सर अभी जैसे अकाउंटिंग करते ही है इंडियन में, बुक कीपिंग अकाउंटिंग करते हैं, टैक्सेशन और जीएसटी में भी इन्वॉल्व ही है, तो मेरा क्या टैक्सेशन से रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, बुक कीपिंग वगैरह ठीक है कर देते हैं। तो मैं ये तो यूएस में भी मैं टैक्सेशन रिलेटेड में ही जाऊँ तो थोड़ा टेक्निकल चीजें आ जाती है टैक्सेशन में। देखिए, नॉलेज दोनों फील्ड का लेना जरूरी है, यू मस्ट हैव टू गो विद अकाउंट्स एंड टैक्सेशन बोथ। ओके, आपने सीए में कितने इयर्स स्पेंड किए अभी तक? 4.5 6 साल से 6 साल, ओके। सो सी इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे वहाँ पे एनरोलमेंट कराइए, बट यू ऑलरेडी हैव स्पेंड 6 years, सो आई वुड रेकमेंड टू गो विथ 3 months more with our institute and you will see the result. क्योंकि जो फाइनलाइजेशन जो सीए फाइनल में होते हैं वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इवन अगर सीए क्वालिफाइड है तो भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। एंड लॉन्ग टर्म अगर सोचे तो आप 2 या 3 साल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में काम कीजिए, और उसके बाद आप खुद की फर्म सेटअप करने का जो अगर सपना देख रहे हो तो आप इजीली कर भी पाओगे, क्योंकि जो स्पेस है, जो जगह है, वो सब आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन इज, जैसे मैं खुद की फर्म, जैसे आपने बोला खुद की फर्म स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मैं खुद की फर्म जैसे यूएस में यूएस अकाउंटिंग और टैक्सेशन भी कर सकता हूँ, एंड साथ साथ में यूके ऑस्ट्रेलियंस का भी साथ साथ कर सकता हूँ। आप मंथली कितना कमाना चाहोगे? 2 lakhs? सर लिमिट कुछ नहीं होती मंथली की, स्काई द लिमिट। ओके, देखिए यूएस में जो है स्कोप ज्यादा है आपको, और यूएस में जो है वो पे आउट अच्छा खासा मिलेगा, दैट्स व्हाई। ओके, रादर देन यूके ऑस्ट्रेलिया आपको, अगर देखिए एक रिटर्न फाइल करके कहीं पे आपको मिल रहे हैं 150 AUD, और दूसरी जगह आप फाइल करते हो तो आपको मिल रहा है 150 USD, तो आप कहाँ पे जाओगे? AUD में जाओगे, USD में जाओगे? यस यूएसडी में जाएंगे। या यू गॉट द आंसर। यस यस यस। ओके ओके सर, थैंक यू सर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू। Therefore, Dhruti Thakkar, please raise your question quickly. यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब अब जैसे कि अभी आपने बताया पहले ही कि सीए या फिर सीएस किया हुआ है तो बेटर रहता है यही कोर्स में आगे जाने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर मैंने सर बीकॉम किया है तो इज इट ओके टू गो विद दिस फील्ड? हाँ, दैट इज फाइन, मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ओके, एंड सर मेरा ऑलरेडी 1 year का एक्सपीरियंस है यही यूएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में, लेकिन उसके बाद मेरा गैप हो चुका है। तो और मतलब उस टाइम पे भी मतलब यही था कि लेक ऑफ नॉलेज था थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा गैप हो गया था थोड़ा पर्सनल इश्यूज की वजह से। तो अभी यही फील्ड में आगे बढ़ना है तो वो चलेगा कि फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लमेटिक होगा कि फिर यही कोर्स करने से सेम एज इट इज वर्क के साथ मिल जाएगा और कोई जॉब? देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, उनको एक ही चीज है, व्हाट आर योर स्किल्स। आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, दैट इज द मेन थिंग। कोई भी कंट्री का अकाउंटिंग होगा, उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी, उनको एक ही कंसर्न है, आपके पास स्किल्स क्या है। अभी आपके पास स्किल्स क्या है? आपने पास्ट में चलो इतने साल का गैप था, बट अभी आपके पास वो स्किल्स है, करंट स्किल्स है,
अभी हमारे पास एक थे कैंडिडेट, उनका कुछ 15 साल का एक्सपीरियंस था, राइट, उनको भी था, एंड अनदर कैंडिडेट भी थे कि उनको गैप हो चुका था, उनको पता नहीं था। तो दूसरे भी अभी एक कैंडिडेट जिनसे हमने बात की कि जो 12 इयर्स तक अदर इंडस्ट्रीज में थे, बट अभी वो वर्चुअल सीओपी की टाइप वर्क कर रहे हैं। सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि अब करंट में आपके पास क्या चीज है, कौन सी स्किल्स है। सर मतलब वैसे तो मैं बात करूँ तो मेरे पास मतलब एक्सेल वगैरह जो आपने बताया जो वो तो है ही, एडवांस एक्सेल वगैरह का नॉलेज तो है मुझे प्रॉपर। मेरा 2 इयर्स का गैप है फिर भी, और उसके बाद भी आईटी का भी नॉलेज बहुत सारा है, मतलब मैंने वो किया हुआ है वर्क में ही ड्यूरिंग द वर्क, मतलब मुझे एक्सपीरियंस उसका भी हो चुका है आईटी का भी। तो अभी ये इनफ ओके है कि अभी मुझे और गेन करना पड़ेगा आईटी और इसमें एक्सेल वगैरह में। एक्सेल, बेसिक एक्सेल, दैट इज फाइन, वो उतना एडवांस में भी जाने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट डेटा एनालिस्ट, यू आर नॉट गोना बी डेटा एनालिस्ट, ओके, यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द अकाउंट्स। और सर अगर मैंने ऑलरेडी आपके यही कोर्स में एनरोल कर दिया है, 1 मंथ भी हो चुका है, तो सर यही सब चीज जो मैं बोल रही हूँ मतलब एक्सेल वगैरह का, तो अगर इसमें मुझे एडवांस में भी अगर नॉलेज गेन करना है तो वो आपके यही लेक्चर्स में हो जाएगा ना? Yeah, we can arrange for that. That's not a problem. Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you. There, how many candidates are there? 3 more candidates. और उसके बाद हम deferred है उन्हें prepaid and accruals की entry सीखेंगे. Sujal, please go ahead. Am I audible, sir? Yeah, you are. Sir, my question is, I have done a graduation in the BCA, okay? Mm. And now Okay. I am pursuing US CMA and currently also looking for a job in the US firms. And also I have a knowledge of the QuickBooks Basic, Excel tools, and so my question is, when a company hire me, okay, so they also shortlisted me and interviewed me, but in the after last round, they only thing said me, you just from the technical background, so this is the issue. Okay, so how can I negotiate any company for the job, sir? आपके पास QuickBooks का बेसिक नॉलेज है, राइट? Yes, sir. Do you know the entry of cells? So I just see the मतलब जो क्विकबुक का मतलब ऑफिशियल साइट पे जो उनका कोर्स होता है, ठीक है, वो लाइक क्विकबुक प्रो एडवाइजर करके एक कोर्स था, मतलब 6 और 7 आवर्स का, वो मैंने कंप्लीट कर चुका है और सर्टिफिकेट भी आ चुका है। ओके, See, it's not about the certificate, Mr. Sujal. What I ask you, आपको प्रैक्टिस, उन्होंने आपको थर्ड राउंड में मना क्यों किया? The reason behind that कि आपको एंट्रीज सब आनी चाहिए yes sir, अकाउंटिंग। but they ask me every entry and I answer correctly, but when I ask for the rejection about the job, what is the reason? So they just tell me you are from the technical background, okay, so when I say if I complete a USCMA part 1, then I apply for the job. So they said me, of course, why not? आपका सीए में कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप नॉन टेक्निकल नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो। दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो हम sir, I applied for the job as a role for a US audit fresher. ओके in the Ahmedabad. ओके, और कौन सी कंपनी में अप्लाई किया था आपने? Of in the Provectus Pro Advisor. Okay. And you sir mentioned analytic business solution. Okay, so recently they opening for the like a senior senior accountants job role. And I just go there and ask about the job. So they just tell me you are a fresher. So this is the opening for the experienced candidate, not the fresher. Yeah, definitely. Senior position जो है, definitely they're gonna hire experienced candidates. So they just take my resume and said me, we will connect you later. Okay, so do not worry about it. Okay, see, once you complete the CMA, then you can easily go with the jobs and they're gonna hire you. And in case if you would like to go now, okay, when you are going to complete the CMA? In the next coming 6 or the 7 months, I completed both the parts. Okay, fine. So in case if you have a time and if you wish to take the practical training also, see, with only QuickBooks certificate that will not work. If I'm gonna ask only 3 questions, so you might not have answer 2.
Yeah, sir. Sure. Because see, do you know deferred revenue automation in QuickBooks? No, sir. Fixed asset automation in QuickBooks? No, sir. Prepaid entry automation? No, sir. That's it. So these are the skills which we provide. Okay, sir. Okay. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Thank you for your time. Mushrat, please quickly. गुड इवनिंग सर। Yeah. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एमकॉम हो चुका है मेरा, मैंने अभी एनरोल की हूँ आपके कोर्स के लिए। और सर मुझे सीए अपीयर्ड भी हूँ। मुझे अभी ये पूछना है कि अभी मैं ये कोर्स तो कर ही रही हूँ, साथ में ऐसा क्या मैं कुछ और कोर्सेज एक्स्ट्रा करूँ या कुछ ऐसा नॉलेज लूँ? एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने एमकॉम किया है, सो यू आर ऑलरेडी होल्डिंग मास्टर डिग्री. ओके. एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू डू हैव? सर मेरा 6 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। Okay. बट उसके बाद गैप हो गया था, ऐसे समझो 7-8 इयर्स का गैप हुआ। बट लास्ट 2.5 इयर्स से मैं क्विक बुक अकाउंटेंट यूएस क्विक बुक अकाउंटिंग में काम कर रही थी। बट ये सडन एक्चुअली वॉर का जो स्टार्ट हुआ था ना, तो उस बीच में थोड़ा जो मेरे जो काम थे, इंडियन वर्कर्स जो थे उनके पास से काम ले लिया गया था और दूसरी जगह काम शिफ्ट हुआ है, तो उस वजह से मेरा काम चला गया है। Okay, no need to learn any extra thing. So you are enough good to be had. So don't worry. You just complete your training, and either after that you can try with the freelancing also, or you can go with the on-site job also. ओके सर। Yeah, both ओके can be. सर। ओके सर, थैंक Yeah, यू सर। yeah. Thank you, Mr. Ashwin. You do have question again? Yes, sir. I'm so sorry, Yeah, but yeah, I please. just will take a minute. Yeah. Yeah. So I just wanted to ask, you said something about the other countries option, matlab other than US, UK, or Australia, or some other countries. So can you please elaborate on that? I'm specifically talking about the freelancing opportunity, sir. So freelancing, you can go with the any companies, but see, whenever you go with the any countries, so everything debit and credit remains same each and every countries. But the thing is, the difference is their payroll compliances, their sales tax Yes. compliances, and their income tax. So can Except one be focused on the bookkeeping and finalization and financial reporting and but not get into see, taxation? Not no, but getting see, into if taxation? if you go with the accounting and finalization, so into the finalization, payroll, 1099 and the sales tax, that is the part of that. In India, we do have a GST, but in US, they do have state and statewide taxes. So sales tax Okay. also the part of accounting. So rather than going Okay. to multiple countries, I would recommend to go with the one specific countries. So that will give you Okay. more Thank you. exposure. Thank you, sir. Thank you. Okay, yeah, guys. So let's now we are going to learn one of the transaction. Sorry, gonna take more time now. So how many of you are aware about deferred revenue? Everyone? Wow. Out of 68. Okay. Yeah, almost all are accountants, so they might be aware about it. Yes. Yeah, Mr. Savish, is this question or you aware about it? Okay, so let me tell you how I'm teaching you, how I'm teach in my session about the training. I mean about the deferred revenue. So you guys are able to see my screen? Yes. Okay. So here I'm going. So the first thing, whenever you do accounting or anything for any companies, it's not just a bookkeeping. And apart from the bookkeeping, what you guys should be aware about the payroll, sales tax, 1099, the other things, then deferred revenue, prepaid expense, accrued expense, and accrued income. Fixed assets. If you guys have knowledge about all this, then you're gonna hire for sure. So now you can evaluate yourself also, like out of this, what you know. आपको इसमें कितना knowledge है? You can evaluate yourself. Like in the payroll, like and we are doing with this only as of now because payroll is a big part. So for the deferred revenue, so the thing which I'm mentioning right now, I'm doing the same thing during my training also.
So let's say deferred revenue. Received 5,000 for the services to be provided in June 2026. Okay. So the first entry, see, this is how you gonna, this is your deferred revenue. This is your deferred revenue. Invoice rates, okay, period. Now tell me which one is deferred revenue. Tell me. So the first entry for this, the amount we have, let's say date 5. Okay. Bank account debit and advances from customer credit. And do the second entry in this, for this. There is a difference. You have received advance. And when you get, when you raise invoice into the month of June, let's say by 6/1/2026, at that time, here debit with 5,000 sales revenue, 5,000 there are 3 entries for one transactions. That's called advances from the customers. And the real part, this is deferred revenue. So how are we gonna do this? Period is when you received bank account debit, deferred revenue credit. Now you have to recognize the revenue. And what is the period? 6/1 to 11/30. That means 6 months. So 5,000 divided by 6 months. Every month 833. The same entry we have to report till the next. In USA, month is, we have to mention the month and then date. So that's the deferred revenue entry. You guys should know about this. 5,000 credit and here you can go with 833.34, 813.34. So debit, and that is your liabilities. And when you have credited that, that creates your liabilities. And here reduce the liabilities. As I told you, whenever you want to increase your liability, just credit it.
Okay, and whenever you have to reduce this, just debit it. So the rule is applied over here. 5,000 debit credit and 5,000 debit. Your account is nil. And for the next 6 months, you have recognized your revenue. And why you have to recognize the revenue? Because we are going to provide them service for the next 6 months. So during during those 6 months, we are going to utilize our manpowers also. The main thing is you have to also recognize your revenue at that time. Done. And then I'm going to give you one of the tip for the accrued expense. I know you all are aware. What is accrued expense? You all are aware about that or not? How many of you guys really would like to know? Okay, Maulik, Mr. Nikhil, Ina, okay. And the transaction, let's say, sales commission or actually due 3,000. So how are we gonna record this into the month of 430? Sales commission debit 3,000 and accrued expense 3,000. That is the entry. And whenever you make the payment, till now what you guys are doing, accrued expense debit and bank account credit when you make the payment. But what else? If you have thousands of sales agent and they are and the payment terms for each and everyone is different. To someone you are paying monthly basis, to someone you are paying quarterly basis, and to someone you are paying on a yearly basis. So the best practice using QuickBooks software is you have to reverse out this transaction first of all. And then here you have to record the expense as a normal entries. The reason behind that, when you record journal entry, QuickBooks gives you one serial number for each and every journal entries. And when you reverse it out, it gives you like this R next to the number. So in case if you have thousands of sales agents and you are accruing their commission on monthly basis. So whenever you want to make the payment, and let's say you have 3,000 row, you just select all of them, export into Excel, and into the Excel, select all of them, apply one condition, highlight, duplicate. In this scenario, what will happen? Control H and R replace with space. In this way, you can reconcile thousands of rows in just fraction of seconds. So this is just an overview for the accrued expense, and that is for the deferred revenue. Now prepaid expense. How many of you are about that? For the prepaid expenses, how many of you are aware about that? All or none? Yeah, see, अगर जिनको पता है डिफर्ड क्या है, उनको प्रीपेड पता ही होगा, right? Done then. So, guys, in our training, we cover all the things. All these things we covered in our training.
1099 इट्स जस्ट लाइक फॉर्म 16A। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हम TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट में पे करते हैं एंड देन वी रिपोर्ट देम, द सेम वे इट्स अ 1099। any payment to the individual person apart from any payment to the individual person more than $600, so we have to issue 1099 to them. Okay, so these are the things which we cover. So these are the things which we mainly cover in our training, and one of the most thing which we are going to offer you guys. Did we miss anything? No. I hope you guys understand what are the skills required to be hired as a freelancer or as an employee. Month-end closing activities also that is required to understand, and these are the abilities to become a freelancer. So अगर किसी को भी freelancer का काम करना है, so you guys have to be accurate for all these 10 points. Yes, Aarti? हेलो, गुड इवनिंग सर। Yes, एक्चुअली Aarti? एक क्वेश्चन था ऐसे कि जो अभी जो वॉर सिनारियो चल रहा है यूएसए और अदर कंट्रीज, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट्स ये फ्रीलांसर के जॉब पे हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तो मैं ये जॉब के बारे में रिसेंटली मुझे पता चला है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आपका कोर्स ज्वाइन कर लूँ, तो देखो मुझे। आप देखो कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी तो असर इंडिविजुअल पर्सन पे बाद में पड़ेगा, पहले कंपनी पे पड़ेगा। If you are working as a freelancer, अगर आप if you are working into the company, so that is totally different thing. अगर आप कंपनी के साथ काम करते हो, अभी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम है और मैं 7-8 इयर्स का एज अकाउंटेंट एक्सपीरियंस है इंडियन अकाउंटिंग में, जो ओके जीएसटी टीडीएस एंड अदर अकाउंटिंग। हाँ। ओके, सो आपको फ्रीलांसिंग यूएस का करना है, राइट? यस। हाँ। तो उसके लिए आपको नॉलेज तो होना जरूरी है ना। हाँ, वही इसलिए मैंने अभी आपका कोर्स की जो डिटेल्स है, मैं लास्ट मंथ से मैं मतलब सर्चिंग में हूँ, और अभी वेबिनार भी अटेंड किया, तो कोर्स ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। लेकिन फिर ओके, जो वॉर सिचुएशन है जैसे, तो उसका कुछ मतलब आपका लोकेशन कौन सा है, सिटी कौन सी है? नासिक। नागपुर में भी ऑलरेडी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज है, यू कैन डू ऑन साइट जॉब। ओके। और ये जो फ्रीलांसिंग जॉब है वो इंडियन कंपनीज मतलब इंडिया में भी मिल सकती है या ओनली यूएसए का ही है ऐसे? ओनली आप फ्रीलांसिंग जो काम करोगे, ठीक है, कहाँ से आप क्लाइंट कहाँ से गेट करोगे फ्रीलांसिंग के, एनी आइडिया? हाँ। नहीं, मतलब देन लिंक्डइन से वगैरह है वहां से। हाँ, तो वहां से आपको फ्रीलांसिंग का काम भी मिल सकता है, राइट? आप कर सकते हो, बट ट्राई करो कि पहले कंपनी में काम करो 1 या 2 मंथ, सॉरी 1 और 2 इयर्स। अगर कंपनी में काम कर सकते हो तो ऑन साइट जॉब करो, दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके। और एक पूछना ऐसा था कि अभी जब हम सेल्फ ओनर जैसे फ्रीलांसिंग में काम करेंगे, अगर और कोई मिस्टेक्स होते हैं तो वो कैसे क्लेरिफाई करेंगे और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ऐसे? आप एज अ फ्रीलांसिंग डायरेक्टली वर्क कर ही नहीं सकते हो, आपकी लिमिटेशन आ जाएगी, क्योंकि उस फ्रीलांसिंग का वर्क करने के लिए एक एक्सपीरियंस स्किल्स, चाहिए। हाँ एक्सपीरियंस, दैट्स मैटर ना। ओके। ओके। हाँ। ओके। ओके। ओके, सो आप एक मतलब बार कंपनी एक्सपीरियंस। में कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद ही फिर एक फ्रीलांसर जैसे जॉब कर सकते हैं। राइट। ओके। तो फिर कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट वगैरह जैसे रहेंगे हमें गाइड करने के लिए? हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए आपका उनके साथ रहोगे तो आप बहुत सी चीजें सीख भी पाओगे। अच्छा। हाँ। ओके। और वो जो सैलरी जो रहेगा वो मंथली बेसिस रहते हैं या कैसे रहते हैं मतलब? जॉब करोगे तो सैलरी मंथली बेसिस पे ही रहेगा ना, और अगर फ्रीलांसिंग का अच्छा। आप काम करोगे तो टास्क वाइज रहेगा, या तो फिर मंथली फिक्स रहेगा, या तो कंपनी वाइज रहेगा। अच्छा। वो सारी ओके। चीजें हम जिनको भी अगर फ्रीलांसिंग का वर्क करना होता है, सो वी गाइड देम कि आपको कैसे करना है, और उसकी हम सारी इन डेप्थ ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके सर। हाँ।
Thank you. Okay, yeah, thank you. Mhm. Okay, so guys, now चलो अगर इन केस अगर किसी को जॉब और किसी को क्वेश्चंस है नाउ, एनीवन हैविंग क्वेश्चंस नाउ? सो पहले उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर देते हैं. ओके, आरती का ध्यान डन. ओके, चलो किसी को क्वेश्चंस वगैरह नहीं है. सो नाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस समथिंग कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1.45 आवर्स, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. सो ये देख के लग ही रहा है कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर दी बट बेटर फ्यूचर एंड फॉर योर करियर. और ये होना भी चाहिए. अगर ऐसी एक रूल है जो मैंने बनाया हुआ है अपने आप के लिए, नॉलेज हर जगह मिल रहा है, बट बात खत्म. एवरीवेयर यू कैन गेट एवरीथिंग. कोई भी कुछ भी समझा रहा है, समझो, कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगा, राइट? मुझे आईटी का जब शौक था तो मैंने बहुत तरह तरह की चीजें की, न सब किया मैंने. और फिर मैंने खुद का आउटसोर्सिंग भी स्टार्ट किया आईटी का. उसके अंदर मैंने अच्छा खासा काम भी किया एंड आई वाज सक्सेस इन दैट. बट अनफॉर्चुनेटली ट्रक आ गए तो फिर तब से फिर प्रॉब्लम हुआ था. बट आई वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट, रियली गुड अमाउंट, की जो अभी की अभी फ्रीलांसिंग करके जो सेटिस्फाइड हो रहे होंगे उतनी अमाउंट में नियर बाय 14 ईयर्स पहले कमाता था. सो जस्ट बिकॉज ऑफ हॉबी, नॉलेज. वन ऑफ माई फ्रेंड वाज इन आईटी, सो उनके साथ रह के मैंने सीखा था. और अकाउंट्स तो बड़े भाई जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई होप यू सीन दैट या CA Sunil Rathod. He is my elder brother and he's a director in Sopo Cyber Securities. Okay, so the first person who gave me lesson, मतलब घर में ही ट्रेनिंग वगैरह थी. Then CA फाइनेंस शाह, जनरल मैनेजर एट एनालिटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन, कि जिन्होंने he taught me accounts, communication, सारी चीजें. Then रजनीकांत शाह, he was a TL over there, कि जिनकी अभी खुद की कंपनी है अहमदाबाद में. एंड आई थिंक उनकी 3 अलग अलग हाउस है, ऑफिस, कॉमर्शियल हाउस, दैट मीन्स कि जहाँ पे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. सो दीज आर माय, वो कह सकते हैं कि मेंटर, और जो इन्होंने मुझे गाइड किया हुआ है. Which is the best industry to work with? What is the US outsourcing industry? And into that, you're asking for inside the US outsourcing, then you need to go with the health and nutrition industries, where you are going to get good amount. I'm working with staffing solutions, so you are into HR department, something like. So guys, you have given this much time. So, but obviously that's my turn to give you rewards to you. Generally, we charge. These are our fee structure. Generally, we charge 25,000 for the account, 20,000 for the taxation, and combo offer that is available at 35,000. Now, you all have like spend good amount and कितने लोगों को भाई इंटरेस्ट हो रहा कि हाँ हमें एनरोल करना है या नहीं करना है. सो दिस इज फॉर यू गाइस. You can enroll with 25,000, okay, instead of 35,000, because you have spent good amount of time over here. अब 2 घंटे तक मुझे सुन रहे हो, आपके इनपुट्स दे रहे हो, बहुत से कम्युनिकेशन भी हुए, बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बहुत से लोगों को आंसर्स भी मिले हैं. सो इंस्टेड ऑफ 35,000 हम ये पूरा 3 महीने का कोर्स, कि जिसके अंदर हम आपको बुक कीपिंग से लेकर एडवांस अकाउंटिंग तक का, क्लाइंट कम्युनिकेशन से लेकर फ्रीलांसिंग वर्क सेटअप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें समझाएंगे. यस मिस्टर अनूप. या मिस्टर अनूप, प्लीज गो अहेड. सर मेरा क्वेश्चन है कि क्लास टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी? क्लास टाइमिंग जो है टोटल 6 बैचेज है दिन में. और सुबह 7 से 8:30 की है, 9 से 10:30,
12:30 से 2, 4:30 से 6, 7 से 8:30 और रात को 9 से 10:30। ओके, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है या कोई स्टडी कर रहे हैं तो उन हर एक के लिए हमने टोटल 6 बैचेस रखी हुई है। और हाँ, अलॉन्ग विथ मी हमारे जो भी ट्यूटर्स हैं, प्लीज नॉट, मैं अकेला कोचिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मेरी पूरी टीम है कि जिसके अंदर क्वालिफाइड सीए है, क्वालिफाइड सीपीए है, क्वालिफाइड ईए भी है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट ट्यूटर हैं कि जो सीए भी है, ईए भी है और सीपीए भी है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। आप सबको कोई भी क्वेरी वगैरह हो, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई एम गोना शेयर माय नंबर ऑल्सो आफ्टर दिस स्क्रीन। तो ये जो हमने 35 का था, हमने सीधा उसको 25 किया हुआ है, और उसमें भी फुल अमाउंट आपको पे नहीं करनी है। यू गाइस कैन रजिस्टर बिफोर 12 AM टुडे विथ 5,000 ओनली, और बाकी के जो अमाउंट है जब आपकी बैच स्टार्ट होती है विद इन अ वीक, या तो वीक 7 से 10 दिन के अंदर आपकी बैच एलोकेशन हो जाती है। अकाउंट्स, क्योंकि इसके अंदर हम आपको क्विकबुक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम आपका प्रो कनेक्ट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको सिलेबस वगैरह शेयर होगा, इवन सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके घर पर हम कुरियर से भेजेंगे। ओके, सो इन 7 to 10 days you can pay the balance 20,000। और 1 वीक में कितने क्लासेस होंगे एवरीडे? 6 क्लासेस, 3 अकाउंट्स के और 3 टैक्सेशन के। और हाँ, टैक्सेशन के क्लास तभी स्टार्ट होंगे आपके जब आपकी अकाउंट्स में पेरोल एंड 1099 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, रीजन ये है कि पेरोल और 1099 समझना जरूरी है 1040 को प्रिपेयर करने से पहले। और थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ कंबाइन करके क्लास चलेगी? 95% थियोरेटिकल नहीं रहेगा, सिर्फ 5% थियोरेटिकल है, बाकी 95% अभी जो मैंने एक्सेल शीट बताई ना, उसकी तरह ही क्विकबुक्स का सॉफ्टवेयर होता है, उसी पे हम ट्रेनिंग करते हैं। टोटल 1050 ट्रांजेक्शंस। और थ्योरी के लिए इसलिए पूछ रहा था ना कि एक्चुअली जैसे कि बेसिक, मतलब मैं एक्चुअली एमकॉम किया हुआ है, बट अभी मैं करंटली सोशल मीडिया मतलब मार्केटिंग करता हूँ। ओके, एमकॉम करके सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सर, मेरा करियर गैप हो गया था, तो लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिला, बट मतलब बहुत सारी जॉब मैंने ढूंढी बट नहीं मिला, तो लास्ट में मेरे को जाके मतलब यूट्यूब से सीख कर फिर एजेंसी ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे का काम वगैरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के काम में करता हूँ। ओके ओके, तो काफी मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो जाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। बीकॉम ऑनर्स भी किया है मैंने। नहीं देखो, ऑलरेडी आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर जगह यूटिलाइज कीजिए। यस सर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा कर ही रहे हो, सो यू शुड हैव टू गो विद दैट। बट अगर आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है सर, तो फिर आपको डिसीजन लेना होगा, फिर दैट यू हैव टू टेक। एक्चुअली गैप हो गया था ना, तो फिर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कुछ काम माइंड। अब आप डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हो, ठीक है, हमारी कंपनी का मेरे यहाँ पे नियर बाय 26 आसपास मेरे पूरा स्टाफ है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं खुद हैंडल करता हूँ। यस सर। प्रमोशन कैसे करना है, कितना बजट रखना है, कौन सी सिटी कवर करनी है, कौन से सेगमेंट में प्रमोट करना है, ये सब मैं खुद कर लेता हूँ। तो डू यू थिंक दैट कि डिजिटल मार्केटिंग अब उतना हार्ड रहा है? नहीं, अब हार्ड ही रहा, काफी इजी हो गया एआई आने की वजह से। यस मिस्टर विघ्नेश। थैंक यू सर। या थैंक Hello. Yes, sir. The hard copy books will be provided, or hard copy, soft copy also, and hard copy both. Okay. Okay, because when you enroll for the this course, you have to give your full address so that our admin department can send the hard copy of syllabus to you. Okay, yeah, Mr. Ashwin. Sir, do you also teach other softwares like Wave and everything, which are useful for the QBO? See, QBO, it's you can say the all-in-one software. Once you learn the QBO, you can learn the Zero also, and you can learn Wave by yourself. No need to spend any extra money to give someone to teach that. That is very easy software. Once you learn QuickBooks now, so you whenever you go with any other software, तो बस यही कहोगे, I miss this
option in this software because QuickBooks has Okay. a lot of functionalities. और जब आप लाइव Okay. सेशन में Okay. आओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर कितनी सारी फंक्शनलिटीज हैं. Okay, and Okay. we Okay. nearby 140 modules in total. Okay. Okay, so that is available there. So don't worry. Thank you, sir. Thank you. Thank Yeah. you. Okay. Yeah, Mushrat, So please when tell is the me. batch starting? Batch is going to start by Monday or not Monday because today we have received so many already enrollments. So maybe after 22nd, mid of next week or Okay. end of next week. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, Mushrat, please tell me. हाँ सर, ये जो आपने बताया है कॉम्बो ऑफर का डिस्काउंट जो है वो हम लोग के लिए भी है जो हम लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं. No, that's not for you. Okay. 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 Yeah, Mr. Arun. Okay. Yeah, Mr. Arun. If you miss any class, so as Mushrat knows, we record each and every sessions because we know almost all our candidates are either corporate employees or they are working profession. So in case if they miss any class, we record them, and recording of all the classes are available for them. And there is no limitation for to view those recordings. You can access as much as time as you want. There is no limitation for that. Svetul Pancha, how to practice 1099 taxation? So 1099, we do have lectures for that. And for the taxation, you are going to get that software, ProConnect software already we are providing. And for the 1099 also, you can prepare using QuickBooks. Okay, so both options there. Yeah, so who is that, Mr. Super? Yeah, Mr. हेलो सर. Yes, please tell me. सर इसमें क्विकबुक ऑनलाइन ही मिलेगा या फिर क्विकबुक डैशबोर्ड का भी ट्रेनिंग मिलेगा? जी नहीं, क्विकबुक्स ऑनलाइन ही आपको दिया जाएगा. इवन वो आपके ईमेल आईडी से ही क्रिएट होगा और आपके मोबाइल नंबर से ही क्रिएट होगा. ओके. या यस मिस्टर अश्विन. Mr. Ashwin, you do have any query? No, sir. I forgot to lower my hand. Okay, fine. Let me do it. Mr. Pankaj, Yeah, how may I Mr. help you? Umesh. Yeah. So I've already paid the fee and the batch is yet to start. So can I avail the discount? How can you? You have already enrolled, na? Yeah, I paid the fee. 50% of the fee I paid, and 50 and the batch is yet to start because what I was informed the batch will be starting from 15. But now, as for the latest information, it is yet to start. Probably on Monday I'll get the information. Yeah, from Monday that. only because the batch and everything is already organized and Yeah. the tutors also. So I'm really Right. sorry to inform you, but you are not eligible for That's the okay. discount. That's okay. That's not a problem. No. So regarding the software which have been already installed, like ProConnect and the other software, QuickBooks. So how long the access would be available For a to lifetime. us? Okay. Yeah, because that is provided by the Intuit company. So don't worry. They are not charging any subscription for the account and copy, and that is the reason we are providing them. Okay. And one more question. So most of the things that we have covered, are related to accounting. And see, basically, I have just passed the EA. And as I told you, my background, I'm very much willing to get some job experience or work experience here in Mumbai. How much possible would it be to get on-site role here in Mumbai so that for next 2 years or 3 years or so on, I get some experience in US taxation based on the EA? Mumbai. So in Pune, there is one company, FinSmart. We do have directly contact with them. Okay. Okay. So we can recommend your profile to them. I can relocate to Navi Pune also because I'm based in Navi Mumbai. And just Yeah, so we do have contact with them, and it's a big company, nearby 1,300 staff they do have. Okay. So do they give preference to those who have experience in BFSI but no experience in US taxation? Because anyway, I'm willing to work as a fresher. But That's not a see, problem. you are going to work as a fresher also. You can work as a fresher also, no? You are going to get the trainings. Yes. Yeah, Okay. so you can have it. Okay, I'll be in touch with you. Whenever when the training is through, I'll be in touch with you. Yeah, sure. Drashti, we do not have any next webinar. Maybe after 6 months. Okay.
It is just because of the demand I came here, to be honest. Tejali, please tell me what's your query? Sir, yes, sir. Good evening. Am I audible? Yeah, you are perfectly. Sir, actually, I have completed my MCOM and I have an experience of around 3 to 4 years. And we have our own company, meaning it is a very small company, hydraulics. Okay, so after my MCOM, I had 3 years of experience, and after that, I got a gap of around 3 to 4 years, and later I started pursuing US CMA. And I was not able to complete my first part. With around 10 marks, I was not able to complete. So I got frustrated and started thinking of doing something new and got about to know your course. No, see, then I warmly, I would say, welcome to our institute to learn. Yes, thank you, sir. Okay, so see, to be honest, you just left with the 10 marks, and Yeah. most probably the concept or you left due to theoretical or the practical. What was the reason? The second part, that was mostly of theory. Okay. I was able to clear this MCQs part and I entered the essay part, but I something left in this MCQs. So we do have CPA in our team. Okay. Okay, and EA also and CA also. So Acha. in case if you need any kind of support from them, so they are ready to help. Okay, sir. Okay, So our main intention, see, to me, let me tell you, and these are recorded lectures. My main intention is not just to make money through the training. My goal is totally different. In the future, we are going to start a school where we can give free education. That is my main goal. Acha, sir. Okay, so as of now, and just because of us, not by me, but by my team, actually, there are so many candidates who got the job in US outsourcing industries. Okay. And we really feel like a blessed, and just because of them, we are on this stage right now. Okay. Yeah, so we are really blessed with them. Okay, sir. Thank you for your guidance. Okay, yeah, don't worry. Okay. Okay, guys, anyone, any other questions? Thank you, Mr. Service. Mr. Service, the reason behind it, I'm sharing some private, like a personal things. I got education from the government school. Okay, and till 2006, I was not able to speak a single word of English. Okay, and not me only, my elder brother, he's a chartered accountant also. We both got education from the government schools. So it's all about the your goal, what you set, and that is the reason I have set few of the aims. So, guys, let me share something more. I think, yeah, these are our numbers. If you would like to connect with us, the first number is mine. That is 972-4646-953. And you all guys gonna get this PDF through email from my admin departments. Okay, so also you can learn all the things. Okay, and this offer is available for today till 12 a.m. Okay, so any of you would like to join my team as a candidate, so please, you all are most welcome. And that's our assurance. After the training, you are going to get the job for sure, whatever the industry, whatever the city in India. Okay, we do have enough context. And if you guys are from Ahmedabad, so that's so like we can say the add-ons. We do have enough context in Ahmedabad. In Confines Company, they have nearby 12 or 14 candidates from our institute. Just yesterday, one of the Vivek Mishra, he got a salary of 30,000 as a fresher in CA firm, where they are providing IT accounting services to the US clients. Our candidates are also there in professional accounting.
then Relay Accounting, so and Pacific Group of companies. Yes, Mr. Vignesh. In South India, do you know? Can you know any of the companies? South India, which city? Chennai, like that. Yeah, actually, we had franchise in Chennai. Yeah, okay. Okay, so don't worry. We are actually we are into this industry. I'm in this industry since last 16 years, but specifically as a tutor since last 2 years, and everyone we do have contact with each and every cities, so don't worry about it. Yes, Swati. Yeah, hi sir. So Yeah, hi. I want more briefing about the courses and the syllabus part, so where I can connect for like detailed session on. So okay, you would like to have details about the course, right? Yes. No worries. You all guys will get the course curriculums plus this PDF to your email ID in next 30 minutes. Okay? To your email ID, the email ID which you have mentioned when you fill up the form. Right? All right. Thank you. Okay, guys. Yeah. Okay. Thank you, everyone. And any of you have questions now? Thank you, Mr. Pankaj. Yes, Mr. Lokesh. Yes, Rushita. What's the question? हाय सर, मुझे ये क्लासेस में ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, पर अभी मैं करंटली वर्क कर रही हूँ। मुंबई में मेरा अभी काम चालू है, तो 31 मई तक मैं वहाँ पे मेरा वर्किंग है, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। अगर आप बोल रहे हो कि 22 मई से वो क्लास स्टार्ट होते हैं। या 22 से अगर देखिए हमारे यहाँ पे टोटल कितने ट्यूटर्स हैं, काउंट तो 1 2 3 4 नियर बाय 7 और 8 ट्यूटर्स वी आर। सो एवरी वीक हमारी न्यू बैच स्टार्ट होती रहती है। ओके ओके, सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली, बट हाँ जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो तब आपको नहीं मिलेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके। मैंने पे किया, तो फिर मैं वो हिसाब से जून में अगर मुझे स्टार्ट करना है तो कर सकती हूँ। या यू कैन डू दैट, दैट इज टोटली फाइन। ओके ओके, और कोई भी बैच आप ज्वाइन करोगे उससे पहले आपको 2 लेक्चर्स दिए जाएंगे कि जो नियर बाय 4 आवर्स के हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन लेक्चर्स। ओके, वो आपको कंपलसरी गो थ्रू करना ही है, क्योंकि वो अगर वो गो थ्रू नहीं करोगे तो आगे जो भी सेशंस होंगे उसमें आप नहीं समझ पाओगे। ओके ओके, या यू सो ओके गाइस, यू कैन एनरोल विद दैट। फाइन। एनीवन एल्स हैविंग क्वेश्चंस? सर अभी मैं ये डिस्काउंटेड अमाउंट पे करके मैं जून 1 में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? या यू कैन। ठीक है। आपको एडमिन से जब भी आपको कॉल आता है जस्ट इन्फॉर्म देम आई एम गोना जॉइन बाय द 1 जून। और हाँ, कोई भी बैच स्टार्ट होने में 7 to 10 days लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज वी हैव टू ऑर्गेनाइज द कैंडिडेट्स। और जो ट्यूटर्स होते हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग बैच होती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट विद 7 to 10 days एटलीस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, yeah, thank you. There are more 31 candidates right now, so I really would like to say thanks to everyone. Mr. Arun, thank you so much. Aarti, Astha, Mr. Amit Parmar, Anup, Mr. Momin, Ashwin. Yeah, Mr. Ashwin, okay, we have already. Ashi Jain, Mr. Chandan, Drashti, Anisha, Ali, Kritij, Mr. Lokesh. Oh, thank you so much for your compliments. Hello, Mr. Mr. Maulik, Meghna, Murshad. So thank you so much, everyone. If you do not have any query, guys, so we can end up the session. Is it all good? Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir. Bye-bye. Yeah, thank you, everyone. Thank you. Bye-bye for your valuable time. Thank you. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you, Mr. Amit. And thank you, Kshitij. Thank you, sir. Have a great day. Yeah. Okay. It's almost evening. Yes. Okay. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much.